Less than 20 kilometers from Mumbai lies Mumbai Kausa, the largest slum in Thane, home to a high-density migrant population facing severe water, sanitation, and health challenges. With a predominantly Muslim population, it has the highest number of zero-dose and under-immunized children, driven by vaccine hesitancy fueled by socio-religious misconceptions, misinformation, and poor socio-economic conditions. कौसा मुमरा ये जो एरिया है यहाँ डेमोग्राफिकली जोग्राफिकली बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि लोगों तक पहुँचना है, लोगों को हमारे प्रोग्राम के बारे में बताना है, उनको समझाना है टीकाकरण का महत्व, पल्स पोलियो का महत्व समझाना है। ये समझाते हम लोग को बहुत सारी दिक्कतें आती थी, कभी हम लोग को एक्सेप्टेंस नहीं होता था। ZMQ recognized the need for innovative interventions to reach hard-to-reach minority communities and identified the transgender community as even more vulnerable. Traditionally engaged in events like marriages and festivals where they sing and dance for donations, transgender individuals have strong social networks and deep local connections. Leveraging their trust within the community, through its Saki project, ZMQ engaged them as health intermediaries to bridge the gap between healthcare systems and families hesitant about immunization. आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं ZMQ में काम कर रही हूँ और मैं तो यही चाहूँगी कि भाई जितने भी जो संस्था है, जैसे कि आज ZMQ संस्था ने आज एक किन्नरों को लेकर साथ में चलना सीखा है, वैसे सरकार ने और ऐसी कई संस्था लानी चाहिए कि हमारे जैसे जो भी किन्नर दिल से कुछ करना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं। अपनी जो कला है, जो अपने अंदर जो उमंग है ना, वो सब छुपा के जो रखी है ना, वो ऐसी कई संस्था आएंगी और किन्नरों को अगर वो बोलेगी ना कि आप आओ हमारे से जुड़ो, तो नक्की इस दुनिया में ना किन्नर लोग है ना पूरी दुनिया बदल देंगे। Engaging transgender individuals as intermediate health workers not only converts vaccine refusal cases, but also provides dignified employment and promotes social inclusion, challenging stigma by positioning them as public health changemakers. Transgender workers in the Saki project identify and immunize zero-dose children, leveraging technology for tracking and timely vaccinations. The project integrates 3 technology layers: surveillance for identifying households with zero-dose cases, monitoring immunizations, pregnancies and recalls, and behavior change using digital comics to address vaccine hesitancy. With 9 stories on different antigens, it fosters timely immunization and health-seeking behavior in hard-to-reach slum communities. We are getting help from the ZMQ NGO. They have a team of transgenders which go door to door and they talk to the mothers regarding the importance of the vaccination. The most significant part of their work is in the conversion of the refusals. During household visits, the team identifies pregnant women. It also identifies zero-dose and vaccine-hesitant families and registers them for follow-ups. Transgender health workers follow up with refusal families using communication skills and digital stories to persuade them. In most cases, families agree to vaccinate their child. For persistent refusal, a transgender health worker revisits with an influencer, often a recently convinced family, to gently persuade them. सहूलत हो गई है हमको कि हमारे घर आके बार बार आके जो है ठंडी गर्मी धूप बरसात में हमारे बच्चों के लिए आते हैं टीका जो है लगाने के लिए। और ये देखो किन्नर जो है वो भी आते हैं कि तुम्हारे बच्चे जो है कितने उनको बहला फुसला के टीका लगवाते हैं। देखो हमारे अच्छे के लिए करते हैं, उनका इसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं है। As part of community mobilization, information kiosks at high-traffic locations distribute IEC materials and showcase digital stories, while transgender health workers actively engage with communities to promote immunization and healthy behaviors.
A key innovation, Mira Theatre, is a grassroots cinema run on solar power and set up in slums to screen digital stories and reinforce immunization messages. Led by transgender health workers, it also features skits and dramas to captivate and educate the community. तर गरजूल मम्मीची इथं आल्यापासून माझी डिलिव्हरी झाली. डिलिव्हरी झाल्याच्या नंतर मी पोरीला टिक्के दिले. मी पोरीचं 9 महिने झाले तरी 9 महिन्याचे टिक्के दिले नाही. 1.5 वर्षाचे आता टिक्के येणार, ते टिक्के देणार आहेत. तर तुलसी मॅडम आणि सना मॅडम हे आल्यापासून सगळी सर्व जानकारी मला सांगितली आहे. In less than 2 years of implementation, the program reached over 390,000 people in the slums of Mumbracausa, identifying 1,511 zero-dose and under-immunized children, as well as 1,244 pregnant women. Through targeted outreach and SBCC activities led by transgender workers, 83% of vaccine refusal cases were successfully converted. जब मैं यहाँ से गुज़रती हूँ तो लोग मुझे सलाम करते हैं, बोलते हैं दीदी कहाँ जा रही हो. मैं कहती हूँ मैं काम पे जा रही हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ. बच्चों को पोलियो डोज पिलाना है, लोगों के घरों में ढूंढना है कि कहीं कोई रह तो नहीं गया, कहीं आपके बच्चे तो नहीं रह गए पोलियो डोज के लिए. ज़रूर पिलाइए, आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है. Join us in celebrating impact, dignity, inclusion, and resilience.